वेलकम इन अनदर वीडियो ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने हाफ सबस्ट्रैक्टर, फुल सबस्ट्रैक्टर एंड 2 बिट मल्टीप्लायर का डिटेल डिज़ाइन देखा था। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम 4 बिट एडर सबस्ट्रैक्टर एंड 2 बिट मैग्नीट्यूड कंपैरेटर का डिटेल स्टडी करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सिलेबस का मेन टॉपिक है मैग्नीट्यूड कंपैरेटर। ठीक है, तो इसमें दो टाइप है। फर्स्ट इज सिंगल बिट मैग्नीट्यूड कंपैरेटर एंड द सेकंड वन इज द 2 बिट मैग्नीट्यूड कंपैरेटर। ठीक है, तो हम दोनों का डिटेल डिज़ाइन देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि मैग्नीट्यूड कंपैरेटर का क्या कॉन्सेप्ट है। तो मैग्नीट्यूड कंपैरेटर इज़ अ डिजिटल सर्किट दैट इज़ अ कॉम्बिनेशनल सर्किट दैट कंपेयर्स द टू डिजिटल और बाइनरी नंबर्स in order to find out whether one binary number is equal, less than और greater than the other binary number। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड कंपैरेटर जो है वो डिजिटल कंपैरेटर है। सो दैट इज़ द कॉम्बिनेशनल सर्किट बिकॉज द डिज़ाइन ऑफ दिस मैग्नीट्यूड कंपैरेटर इज़ बाय यूजिंग द बेसिक लॉजिक गेट्स। सो दैट कंपेयर्स द टू डिजिटल और द बाइनरी नंबर्स। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड कंपैरेटर क्या करेगा, कंपेयर करेगा दो बिट्स को। ठीक है, एंड अगर हम दो बिट्स को कंपेयर करते हैं तो देर आर 3 पॉसिबिलिटीज़ आर देयर। सपोज ए इज़ अ सिंगल बिट एंड बी इज़ अ सिंगल बिट। सो इन दैट देर आर 3 पॉसिबिलिटीज़। फर्स्ट वन, इफ ए इज़ ग्रेटर देन बी। सेकंड वन इज ए इज़ इक्वल टू बी एंड द थर्ड पॉसिबिलिटी इज बी इज़ ग्रेटर देन ए। ठीक है, तो अगर हम दो बिट को कंपेयर करते हैं तो 3 पॉसिबिलिटीज़ है। ठीक है, ए इज़ ग्रेटर देन बी, ए इज़ लेस देन बी और ए इज़ इक्वल टू बी। So that is the magnitude comparator. It compares the magnitude of both the bits. So we can form the n bit of comparator. So it is the block diagram for the this n bit comparator. So we locally design the circuit for which we'll have the two inputs. One is A, other is a B. So we have 3 output. A is greater than B, first condition. Second, A is equal to B, and third is A less than B. Then we'll take the 1 bit magnitude comparator. So a comparator used to compare the two bits is called as a single bit comparator. ठीक है, अगर हम सिंगल बिट को कंपेयर करेंगे सिंगल बिट से, सो इट इज़ कॉल्ड एज अ सिंगल बिट कंपैरेटर. इट कंसिस्ट ऑफ 2 inputs, each for 2 signal bits numbers are there. So there are 3 outputs are generated. So single bits are A, first one. Second single bit will be the B. We compare this A with the B. So there are 3 possibilities. A is less than, A is equal to or A is greater than B. So this is the truth table for the 1 bit comparator. So we can compare this bit. So these are the 2 bits. So 2 raised to 2 will be the 4. So there are 4 conditions in the truth table. So first condition is when A is 0 and B is 0. So we can say that A is equal to B because A is 0 and B is 0. So for this A is equal to B, there is a 1 and the other two conditions will be a 0 because A is equal to B. Second condition, when A is 0 and B is 1, so in that condition B is greater than 1, like that. So it is B is greater than 1. So that will be the first condition. So it is 1 and other two condition A is equal to B and A is less than B will be the 0. Third condition will be the A is 0, B is 0. So in that condition A is greater than B. So that will be a 1 and other two conditions A is less than B and A is equal to B will be the 0. So that is A is greater than B. That is the third condition. Fourth condition is when A is 1 and this B is 1. So A is equal to B will be the 1 and other two condition A less than B and A greater than B will be the 0. So that is A is equal to B. So these are the 3 conditions and 4 input conditions are given to compare these single bits, that is A and B. Then we'll see the design
So to form the design, first we have to get the boolean expression or the boolean equation from this truth table. Then after that we can design the final circuit. तो सबसे पहले हमें ट्रूथ टेबल से बूलियन इक्वेशन फॉर्म करने पड़ेंगे, ठीक है। एक बार बूलियन इक्वेशन फॉर्म हो गए, ठीक है, तो उसके बाद हम इजीली डिज़ाइन कर सकते हैं। सो देर आर 3 आउटपुट्स, सो नेचुरल देर आर 3 boolean equations are there for a is equal to b, a is less than b, and a is greater than b. So first we'll take a is greater than b. So in a is greater than b, consider this column where there is a 1. So at that condition, take the inputs, because boolean equation will give the relation between output and the input, like that. So the output is a is greater than b, so is equal to, ठीक है। तो जहाँ पे ये 1 है वो रो हमें कंसीडर करना है। उस कंडीशन में इनपुट क्या है, a is 1, so take as it is, and this b is 0, so taken as a b dash, means complement. So that is the our first boolean expression for a is greater than b. Second one, we take the a less than b. So in that condition, consider the 1. So here is the 1, consider that row, ठीक है। तो उस रो को हमें कंसिडर करना पड़ेगा। यहाँ पे a 0 है, so therefore it will be a dash, means complement is there, and b is 1, so b as it is. Third one will be the a is equal to b. So for a is equal to b, it will be a, there are 2 ones, first and the fourth row will be the 1. So consider a is 0 and b is 0 for this one. So that will be the a dash plus b dash, sorry, a dash into b dash, plus second one will be this one. So a is 1 and b is 1, so plus ab is there. So that is the third boolean equation. So first one, a is greater than b, it is a b dash, a is less than b, it is a dash b is there, and the third one, when a is equal to b, it is a dash b dash plus ab is there. Then after that we can easily design the this single bit comparator. So we know that for multiplication or the product we use the AND gate. So there is a relation of multiplication in this a and b dash. In second term also there is a product term is there, so AND gate is used, and third one OR gate is used, or we can simplify it. So by using XOR gate we can design it, or we are taken as it is, so that 2 AND gates are required. First term first AND gate, second term second AND gate, and one OR gate is required because there is a addition, ठीक है। तो इस तरह से भी हम ले सकते हैं या इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। देन विल सी द डिज़ाइन। So here is the design. There are 2 inputs, a and b is there, and for complement we use the NOT gate 1, NOT gate 2. Here the AND gate is used, that is a is less than b, a is greater than b, and a is equal to b. So 2 AND gates are used and one OR gate is used. So that is the design for this single bit comparator. तो इस टॉपिक पे MCQ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अगर हम 2 बिट को सपोज कंपेयर करते हैं तो व्हाट इज़ द रिजल्ट, ओके, इट विल बी 1 2 3 और 4. सो नेचुरली इट विल बी 3 कंडीशंस आर देयर, ओके। या फिर इस तरह से भी दिया जा सकता है कि द सिंगल 2 बिट्स आर कंपेयर, देन एट दैट टाइम द 3 कंडीशंस आर विल गेट. सो फर्स्ट वन इज a इज लेस देन b, सेकंड वन a इज़ ग्रेटर देन b, एंड व्हाट इज़ द थर्ड कंडीशन, ठीक है। तो वहाँ पे 4 ऑप्शंस होंगे, तो आपको उसमें से चूज़ करना है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन पॉसिबल है,
मैग्नीट्यूड कंपैरेटर टॉपिक पे। देन नेक्स्ट टाइप ऑफ मैग्नीट्यूड कंपैरेटर इज़ अ 2 बिट कंपैरेटर। तो पहले जो लिया था हमने वो सिंगल बिट था, हमने ए को बी के साथ कंपेयर किया था, ठीक है। सो ए सिंगल बिट एंड बी सिंगल बिट, ओके। ये आपका 2 बिट कंपैरेटर है। तो इसमें 2 इनपुट्स रहेंगे ए के लिए और 2 इनपुट्स रहेंगे बी के लिए, ठीक है। फॉर ए फर्स्ट बिट इज़ A0, सेकंड बिट इज़ A1। फॉर बी फर्स्ट बिट इज़ B0, सेकंड बिट इज़ B1, like that. So A1, A0 and second is B0, B1, ठीक है। तो ये 2 बिट्स है, इट इज़ अ 2 बिट and it is compared with these 2 bits of A, like that. So it is a 2 bit comparator, ठीक है, कंपैरेटर। सो लास्ट जो हमने कंपेयर किया था वो A विद B था, सिंगल बिट, ओके। यहाँ पे A के लिए 2 बिट्स है एंड B के लिए 2 बिट्स है, like that. So a comparator used to compare 2 binary numbers, each of 2 bits is called as a 2 bit comparator. It consists of 4 inputs, okay, 2 for this A and 2 for the B, and 3 outputs to generate the first one is the less than, equal to and greater than between the 2 binary numbers, ठीक है। तो इसमें भी 3 कंडीशंस होंगी जो सेम सिंगल बिट कंपैरेटर में थी, A is less than, A is greater than or A is equal to B, like that, by comparing these 2 bits. So here is the truth table. So we take the first condition, because there are 4 bits, so that is 2 raised to n formula is used, okay। तो इसमें वैल्यू पुटअप करेंगे हम, 2 raised to 4 is 16, so that's why here 0 to 15 conditions are taken, means total are 16 कंडीशंस आर इन द ट्रूथ टेबल, ठीक है। तो इस तरह से ये कैलकुलेट करना है। फर्स्ट जो कंडीशन है, दिस A0 एंड A1 इज 0 0, सो दिस इज 0 0 एंड B0 एंड B1 आर 0 0, सो वी कैन से दैट A इज इक्वल टू B इन दैट केस, लाइक दैट। द सेकंड कंडीशन इज A is 0, B is 0, B1 is 0 and B0 is 1. So it is 0 0 0 1 is there. So in that condition B is greater than A. So here this B is greater than A, here is the 1 and other 2 conditions are 0, like that. So इस तरह से आपको ये ट्रूथ टेबल सॉल्व करना है। आफ्टर दैट we can write the Boolean equation from this truth table. So here 3 outputs are there, so naturally 3 equation will be formed for the Boolean expression, and using it we can design this 2-bit magnitude comparator. So here 4 inputs are there, so that 4 input or 4 variable k map is used here, and we are putting the values for these 3 outputs. So first is the A is greater than B, consider that column. Second column will be the A is equal to B, which is the output column, and the third one will be the B is greater than A or A is less than B, like that, okay। तो इस तरह से हमें तीनों जो बूलियन इक्वेशंस है, ठीक है, या बूलियन एक्सप्रेशन है, वो हमें के मैप के ज़रिए मिल जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। आपको सिर्फ ये कॉलम्स जो है वो कंसिडर करना है, तो 3 के मैप्स बनेंगे 4 वेरिएबल्स के, ओके। ए इज़ इक्वल टू बी, ए इज़ ग्रेटर देन बी एंड ए इज़ लेस देन बी के लिए, ठीक है। तो जहाँ पे भी वैल्यू 1 है वो आपको पुटअप करना है ये ट्रूथ टेबल में, एंड ज़ीरोज़ के लिए, ठीक है, जैसे आपको टोटल जो कॉलम है, ठीक है, वो कंसिडर करना है। ये ऑलरेडी हमारे एग्जांपल्स हो चुके हैं के मैप पे, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे पुट करना है एंड ग्रुपिंग बनाना है। तो ग्रुपिंग हमारा वंस के लिए बनता है, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट है ए इज़ ग्रेटर देन बी, आफ्टर पुटिंग द वैल्यूज ऑफ दिस वंस एंड जीरोस फ्रॉम दिस कॉलम ऑफ ए इज़ ग्रेटर देन बी, वी कैन ग्रुप द number of ones. So in that there is a possibility of single pair will be there, then octet will be there, or quad is there, and a single bit or individual bits pairing is there. So here
there are 2 ones, so it is a pair of 2 bit. Here the quadrature will be formed quad, so it contains the 4 ones, 1 1 1 1, and this one is single, so it is pair with the this one. So the 3 groups will be happen, so that is group 1, this is group 2, and this is group 3. So we will get this 3 equation and it will solve by using the Boolean algebra and the theorem. So we will get the single equation for A is greater than B. Same for A is equal to B. The second K-map is there. Put the values from A is equal to B column into this K-map. Then after that grouping, so we know that a single group is also happen by using a circle. So here single one is there, this single one is there, and this single one, like that, because there is no pair and quadrature grouping is there. So here clearly individual ones group is there, so we form the equation, Boolean equation for A is equal to B. Then third one is this A is less than B by putting the values of from column. After that we make the grouping, so that is a quadrature. So this is the 4 ones are there, first, second, third and fourth, so that is group 1 is there. This is the group 2 is there, which is the individual group for this one and this one, and this is the pair of group is there, so it is group 3 is there. So by solving this group 1, group 2 and group 3, we get the one Boolean expression. So here are the 3 Boolean equation. First one is A is greater than B. It is A1 B1 dash plus A0 B1 dash B0 dash plus A1 A0 B0 dash is there. Second one will be the A is equal to B. So it is, after solving, it will be a A0 XOR B0, A1 XOR XNOR B1 is there, and the third one is the A is less than B, that is A dash B1 plus A0 dash B1 B0 plus A dash A0 dash B0. So by using these 3 Boolean expression, we can simple design this 2-bit magnitude comparator. Then we'll see the design. So here 4 inputs are there, जो कि है A0 A1 B0 एंड B1 इज़ देयर. ठीक है, तो यहाँ पे 4 नॉट गेट यूज़ किए, क्योंकि हमें A1 डैश भी चाहिए, A0 डैश भी लगेगा. ठीक है, क्योंकि हमारे बुलियन इक्वेशन में ऑलरेडी टर्म्स चाहिए. ठीक है, इसलिए हमने नॉट गेट के भी कनेक्शन किए यहाँ पे. तो यहाँ पे हमें कॉम्प्लीमेंट मिलेगा. ठीक है, आफ्टर दैट हमें एक्स नॉर गेट भी लगेंगे 2. ठीक है, तो ये एक्स नॉर गेट यूज़ किए. ठीक है, then AND gates are also required, and these are the OR gates. Okay, so by using this combination we'll get the 3 output, which are A is less than B, first one, second A is equal to B, and third one is A is greater than B, like that. तो ये टोटल डिज़ाइन है 2-bit magnitude comparator का. So that will end this magnitude comparator topic. Then we'll take the 4-bit adder and subtractor circuit. So the next topic is 4-bit binary adder and subtractor. So in digital circuit, a binary adder subtractor is one which is capable of both addition and subtraction of binary numbers in one circuit itself. ठीक है, तो ये जो 4-bit binary adder and subtractor है, इसमें dual combination है, means we can add the 2 binary numbers or which are 4-bit, or we can subtract the 2 binary numbers of the 4-bit. So the operation being performed depends upon the binary value the control signal holds. So it is one of the components of ALU. So ALU is nothing but the arithmetic logical unit is here. So this is A and this is B. So it is a 4-bit number, so it will be considered as A0, A1, A2 and A3 for this A bit, and for B bit it will be B0, B1, B2 and B3. So we can
take the addition of this 4 bit or we can make the subtraction in this single circuit. So that's why it is 4 bit binary adder and subtractor. So the circuit consists of 4 full adders. ठीक है, तो इसका जो सर्किट डिज़ाइन होगा उसमें 4 फुल एडर्स यूज़ किए. ठीक है, जो ऑलरेडी हमारा स्टडी हो चुका है एडर्स में, फुल एडर का. ठीक है, सो फुल एडर हैज़ द 3 इनपुट्स A, B and C in, means carry in is there. Since we are performing the operation on 4 bit numbers, there is a control line K that holds the binary value either 0 and 1. ठीक है, तो यहाँ पे जिस तरह से हमने मक्स में अनेबल का यूज़ किया था, ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे एक कंट्रोल लाइन होगा. ठीक है, विच डिटरमाइंस द ऑपरेशन बीइंग कैरिड आउट फॉर एडिशन और सब्सट्रैक्शन. ठीक है, क्योंकि हमने देखा कि ये जो 4 बिट कंपैरेटर है ये डिज़ाइन किया है एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन बोथ के लिए. ठीक है, मीन्स ड्यूअल नेचर है, तो इसीलिए यहाँ पे कंट्रोल बिट यूज़ होगा के. ठीक है, तो के की वजह से क्या होगा, मीन्स एडिशन अगर होना है तो के का बिट अलग रहेगा, एंड अगर सब्सट्रैक्शन परफॉर्म करना है ए एंड बी के बीच विच इज़ अ 4 बिट नंबर्स. ठीक है, तो के का वैल्यू अलग रहेगा. सो बाय यूजिंग द वैल्यू ऑफ दिस के which is 0 or 1 that determines the operation being performed in this 4 bit binary adder or subtractor. Then we'll see the detailed design of this 4 bit binary adder and subtractor by using the 4 full adders. तो इसके लिए पहले फुल एडर का डिटेल स्टडी आपको पता होना चाहिए, बेसिक जो भी है. ठीक है, तो ये सर्किट आपको इजीली समझ में आएगा. तो यहाँ पे टोटल 4 फुल एडर्स यूज़ किए, दैट इज़ द फर्स्ट, सेकंड फुल एडर, थर्ड एंड द फोर्थ फुल एडर इज देयर. एंड हियर XNOR gate will be used, and this 4 full bit adder has 3 inputs. This is carry in, this A0 and B0. So these are the 2 inputs and this carry in is the third input, and the output is sum and कैरी आउटपुट इज़ देयर. ठीक है, तो जिस तरह से हमने 4 फुल एडर का स्टडी किया है उसमें A, B, C and आर द 3 इनपुट्स एंड आउटपुट इज सम एंड कैरी आउट. ओके, और कैरी इज़ देयर लाइक दैट. तो यहाँ पे 2 इनपुट्स है टॉप एंड में, एक इनपुट से आपका RHS साइड से, दैट इज़ द कैरी, एंड देयर आर 2 आउटपुट विच इज सम एंड कैरी इन केस ऑफ दिस एडिशन. ठीक है, अगर हम एडिशन लेते हैं तो सेम यहाँ पे जो सेकंड बीट है A1 B1 है फुल एडर सेकंड के लिए. ठीक है, कैरी आउटपुट जो रहेगा फर्स्ट फुल एडर का वो एज अ इनपुट के लिए काम करेगा सेकंड फुल एडर के लिए. समेशन इज S1 एंड कैरी इज C1. ठीक है, तो ये कैस्केडिंग में यूज़ किए. कैस्केडिंग मीन्स व्हाट, द आउटपुट ऑफ फर्स्ट इज गिवन एज अ इनपुट टू द second like that, and the output of this second will be given as a input to the third. ठीक है, so that is called as a cascading. तो ये जो कनेक्शन है फुल एडर के वो कैस्केडिंग में है. ठीक है, फॉर थर्ड फुल एडर दिस A2 and B2 are the inputs, and C or C1 is the input and S2 is the summation and C2 is the carry output, and for last bit is B3 and A3 are input for this full adder 4, and the C2 and is the input and the output is C3 and carry out. okay, like that. तो यहाँ पे 4 बिट का जो एडिशन है S0 to S3, that is the output for summation and this C out. ठीक है, अगर कोई कैरी जनरेट होता है आफ्टर द दिस 4 बिट एडिशन, सो दैट विल बी द कैरी आउट इज देयर. ठीक है, तो इस तरह से आपका ये टोटल डिज़ाइन है 4 बिट एडर का एंड द सबस्ट्रैक्टर. नेक्स्ट टॉपिक ऑफ सिलेबस इज द BCD एडर. ओके, BCD मीन्स बाइनरी कोडेड डेसिमल नंबर्स. सो उसका हमें एडर का डिज़ाइन लेना है. ठीक है, सो BCD स्टैंड फॉर बाइनरी कोडेड डेसिमल. सपोज वी हैव 2 4 बिट नंबर्स of A and B. So the values of A and B can be varies from 0, that is 40 in binary, and to the 9, that is 1001 in binary. ठीक है, तो हमने ऑलरेडी स्टडी किया है BCD का. सो BCD इज बाइनरी कोडेड डेसिमल.
मीन्स कोई भी बाइनरी नंबर्स को अगर हम 4 बिट फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है, सो दैट कैन बी अ बाइनरी कोडेड डेसिमल नंबर, ठीक है। तो 4 बिट फॉर्म में हमें जो कोई भी डेसिमल नंबर है, ठीक है, तो उसको हमें लिखना है, सो दैट इज़ द BCD नंबर। सो हियर 0 to 9 आर द वैलिड BCD and from 10 that will be a in the BCD up to F means 15, so that will be the invalid BCD. Okay, so that is valid and that is invalid BCD. So that is the basics of BCD number. So that's why we are considering this valid number 0 to 1001, that is the 0 to 9. So in BCD 4 bit adder, it has the two inputs. First one is A, second one will be the B, so which is the input, and the output is Y is there. Then we already know that how this BCD addition will be done, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट यूनिट में हो चुका है ऑलरेडी। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए, जो सर्किट अभी हमने ब्लॉक डायग्राम लिया 4 बिट BCD एडर का। सपोज ए जो है वो आपका 0 1 1 1 इज़ देयर एंड बी इज़ अगेन अ 4 बिट दैट इज़ 1 0 0 0, ठीक है। तो ये का अगर हम कंसिडर करेंगे तो वो आएगा आपका 7 0 1 1 मीन्स 7 in the decimal, and this 1000 which is B means 8, so 7 plus 8 is 15. ओके, तो अगर हम इसका एडिशन करेंगे तो हमें बाइनरी नंबर जो मिलेगा वो फॉर 1 वी कैन राइट इन द 4 बिट, सो दैट इज़ 001, and for 5 it will be a 0 1 0 1 is there, so that is total 8 bit. Okay, so that is the output in the BCD, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे एडिशन होगा BCD नंबर्स का। तो आज का वीडियो लेक्चर हम यही एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम कुछ कोड कन्वर्टर्स का डिटेल स्टडी करेंगे। सो थैंक यू।